Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi guys, this is Krishnakant Singh. This is Shilpa Singh Rajput. Again, welcome back to our channel Krishna Views. Guys, हम लोग ने कुछ दिन पहले हालांकि बहुत टाइम लेने के बाद हम लोग ने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी कि टॉप 5 इंटेलिजेंट एजेंसीज़ के बारे में हमने वीडियो बनाई थी। वो वीडियो बहुत ही थोड़ी लेंथी हो गई थी, लेकिन वो रिएक्शन से थोड़ा हटके थी क्योंकि वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। क्योंकि उस वीडियो के एंड में हम लोग ने थोड़ा सा रिसर्च भी किया था, आप लोगों के सामने किया था, जिससे कि हम लोग मतलब ये रिज़ल्ट पे पहुंचे थे कि आईएसआई कहीं ना कहीं बहुत अपने आप में ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत सारी टॉप साइट्स पे वो टॉप 3 में आ रही थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो ज़रूर आई बटन में जाइए और वो आपको मिल जाएगी। लेकिन उस वीडियो पे हमने ये भी क्वेश्चन पुट किए थे कि ये कोई हमारे पास कोई डेटा नहीं है, हमारे पास कुछ है नहीं, किस बेस पे आईएसआई को नंबर 1 पे रखा जा रहा है। तो काफ़ी लोगों ने हमको ये एफटीडी फैक्ट की वीडियो सजेस्ट की थी, एफटीडी फैक्ट ऑन आईएसआई। तो आज हम लोग फाइनली इस पर रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो 10 मिनट की है, यानी कि इसके अंदर मेरे ख्याल से पूरा का पूरा कवर कर होने वाला है। तो वीडियो हम लोग स्टार्ट करें इससे पहले हम लोग आपको बोलना चाहेंगे कि अगर आप लोग न्यू है हमारे चैनल पर, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो यार होता है मैं भी कभी यूट्यूब वीडियोस देखता हूँ, सब्सक्राइब करना भूल जाता हूँ। तो अभी नीचे जाइए, सब्सक्राइब का जो बटन है उसको प्रेस करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी दे देना, लेकिन उसके लिए वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं इसको, और हियर वी गो, 1 2 3 एंड स्टार्ट। The Inter-Service Intelligence, also known as the ISI for short, was formed on January 1st, 1948. The agency is made up of military officers and personnel from Pakistan's armed forces. Pakistan's powerful intelligence agency ISI is among the most active intelligence enterprise and covert direct action forces in the world. It is part of the Pakistani army, but it operates generally beyond the control of the Pakistani government as a whole. Thanks for joining me here on another episode of FTD Facts. I'm Leroy Kenton, and now by far this past week, this was the most requested topic. I mean, like, everybody wants to know about the ISI. Mustanir Ahmed requested it, Zuhaib Mohammed as well, Salman Saeed, and then we have Khalid al-Balochi, and then we have Minahal Salim, and not to mention a bunch of other people. So let's begin with the facts. The American Crime News declared Pakistan's Inter-Service Intelligence to be the world's best and strongest intelligence agency back in 2011. The ISI headquarters is located in Islamabad, Pakistan, and its main focus is to protect Pakistan's national interests, as well as look into matters of political and social interest to Pakistan and advise the military in the best steps to take. Now, over the years, the ISI has stopped many terror-related attacks well before they were even executed. The ISI is also the largest intelligence agency in the world. The ISI has close to 10,000 agents in the field worldwide. Ironically, it's one of the least funded agencies in the world. It's above all laws in its home country. ये बात भी है कि जैसा मैं बोल रहा, सबसे लीस्ट पेड एजेंसीज है, क्योंकि सबसे कम पैसे मिलते होंगे इनको, शायद से वो सबसे कम तो नहीं बोल सकते, लेकिन कम मिलते होंगे कंपेयर टू CIA और जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ की है। तो भी ये स्टिल नंबर 1 और 2 पे ऐसे लोग कहते हैं, तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में ये। Of Pakistan, and it's often referred to as a state within a state because its policies are made outside of all the other institutions with the exception of the army. Now, I want to talk a little bit about Operation Cyclone. If you're not familiar, it was a code name given to an operation between the American CIA and the Pakistani ISI beginning in 1979 and ending in 1989. But that was the U.S. plan, a trap codenamed Operation Cyclone, funded by the CIA and designed to draw the USSR into an expensive and distracting Vietnam-like war. Now, the objective of this mission was to stop the invasion of the USSR forces into Afghanistan by providing support to the Mujahideen fighters in Afghanistan. Now, it was one of the most expensive CIA operations that it has ever undertaken, and it cost them roughly $20 to $30 million US every single year. But that was up until 1980, and by the time they reached 1987, it rose to $630 million a year. It's also reported that no ISI agent has ever been caught or turned. Although this has never been verified, the Pakistani government has not yet taken responsibility for any alleged
ये एक बहुत अच्छी बात है कि अभी तक हर कंट्रीज़ के जो खुफिया लोग हैं वो पकड़े गए हैं, लेकिन इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि अभी तक आईएसआई का कोई नहीं पकड़ा गया है। पता नहीं, इसकी इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, लेकिन कह रहे हैं तो दम तो होगा ही। Undercover agent that was caught on foreign soil. There are stories of officials like squadron leader Khalid Khwaja that were arrested on Pakistani soil for conspiracy against the state, but it seems like the ISI has been very good at insulating themselves from any direct involvement in any of the covert operations that they have supposedly orchestrated. If this is true, that's very impressive. The ISI have also played very crucial roles in arresting members of Al-Qaeda as well as the Taliban. Even though most Western TV shows and movies show the ISI in some kind of negative light, where they're possibly shown collaborating with terrorists, the ISI actually have worked very close with the CIA in bringing down crucial targets and officials of the Taliban and the Al-Qaeda all across the world. ISI is a very professional organization in my experience over the years. I have a lot of respect for them. And I also think it's only in Western minds, and in especially American minds, that you can expect an intelligence service of a foreign country to do something counter to its own interests, to its country's interests. While there are sources that link ongoing relations between the terrorist organizations and the ISI, the Pakistani intelligence service has played a very crucial role in the capture of very prominent agitators like Ramzi Youssef, Abdul Ghani Baradar, Ahmed Omar, Saeed Sheikh, and many more. Pakistani security forces captured one of Osama bin Laden's chief lieutenants, Abu Zubaydah, along with 19 other al-Qaeda operatives in the eastern Pakistani city of Faisalabad. The ISI arrested September 11 mastermind Khalid Sheikh Mohammed. Going further, the ISI and the Pakistani military have worked effectively with the United States to continue pursuing the remnants of al-Qaeda, and following 9/11, Pakistan stationed 80,000 troops in the troubled province of Waziristan near the Afghan border in order to help break the back of the Al-Qaeda network. Now, as I mentioned earlier in this episode, that the ISI have close to 10,000 members, and I say that because the official number hasn't been confirmed. But what is known about the ISI is that they do recruit from Pakistan's military, as well as they recruit civilians and put them through a lot of rigorous training. The training seems to be very secretive because there's very little information and details about it. But what we do know is that the agents are trained in covert intelligence gathering and counterintelligence. Again, I mentioned that the headquarters of the ISI is located in Islamabad, Pakistan, and the complex consists of various low-rising buildings separated by lawns and fountains. Declan Walsh, a journalist at The Guardian, he says that the entrance is suitably discreet, no sign, just a plainclothes officer packing a pistol. Walsh also said that the complex resembles a well-funded private university and that the buildings are neatly tended. Moving on now to Operation Tupac. Yeah, you heard that correctly, but it has nothing to do with the American rapper. June 16, 1971, Mama gave birth to a hell-raising heavenly son. Operation Tupac was the name of a three-part operation that was designed to secretly support the militants of Kashmir. It was partly started by Pakistan's president Zia-ul Haq back in 1988, and the name comes from Tupac Amaru II, which is the 18th century prince who led the War of Liberation in Peru against the Spanish rule. The ISI is currently engaged in covertly supporting the Kashmiri militants in their fight against the Indian authorities in Kashmir. This is because the militants in Kashmir are fighting to be independent from India and become part of Pakistan. Of course, for Pakistan, the overwhelming obsession is India. Another thing I want to highlight is the Kargil War. The Kargil War was back in 1999. The line of control between India and Pakistan is probably one of the most inhospitable places in the world. There's an unwritten agreement that during the winter, neither force will occupy the border's posts. The ISI broke this agreement in the winter of 1998 to 1999, which led to the Kargil War in the following summer. Although Pakistan is considered to have lost this war, the war is also considered a victory for the ISI as it caught RAW, its Indian counterpart, completely off guard. India had no clue about the infiltration until they were informed about unknown strangers occupying Indian posts.
Now we're coming down close to the end. Let's talk about Mullah Mohammed Umar Mujahid. He was a top Taliban leader, and it's an open secret now that he was trained by the ISI. A captured Taliban spokesman by the name of Mohammed Hanif told the Afghan authorities back in January of 2007 that Omar was protected by the ISI in the city of Quetta in Pakistan. By November of 2009, the Washington Times were claiming that Omar had been helped by the ISI and that he was now in Karachi. It was only in January of 2010 that Amir Sultan Tarar, who was a retired official and ISI agent, said that Omar was ready to break with his Al-Qaeda allies and make peace with Afghanistan. And finally, let's talk about nuclear tests. Although it's never been proven for sure, but it's said that the Indian RAW as well as the Israeli Mossad flew over Pakistan's nuclear test facilities in order to gather information, but they were unable to do that because the ISI planned to keep its nuclear facilities secret and even change the location of its test sites multiple times to keep away anybody from seeing anything. They finally settled in the Pakistani city of Chagi and ensured the security of the nuclear equipment by guarding the transport plane with 6 F-16 fighter jets. So it's unclear what sort of nuclear tests have been going on, but that's just how the ISI. इंडिया भी जब न्यूक्लियर पावर बना था तो इंडिया ने भी जो ये है छुप के किया था, अमेरिकन सैटेलाइट से छुपकर अपना जो वो किया था, सेम एज पाकिस्तान ने भी किया था। और उसमें जो ऐसा बता रहे हैं इसमें कि आईएसआई का हाथ था, मतलब आईएसआई के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा था, जिसकी वजह से अमेरिकन को बिल्कुल भी उसकी भनक नहीं हुई। तो हम लोग ने हम जानते हैं, इंडिया की हिस्ट्री जानते हैं कि इंडिया ने कितना मुश्किल से छुप के ये चीज़ें की हैं। हमारी एक लेटेस्ट मूवी आई परमाणु, उसमें हमने कितनी मुश्किल से अमेरिका के सैटेलाइट से छुप के ये काम किया है। ऐसे दिन में करना पड़ता था, मतलब बहुत कम टाइम मिलता था करने के लिए। तो अगर ये आईएसआई के थ्रू अगर ये काम किया गया तो फिर ये roles. People don't necessarily know exactly what they're up to. Now that concludes this episode about the ISI. Thank you guys so much for bringing it to my attention. I learned a lot during this video. This episode of FTD Facts is... तो वीडियो हो चुकी है यहाँ पे एंड। तो आप क्या कहना चाहोगे? है ना, लोग मुझे यही बोलते हैं कि आप ही बोलते हो वीडियो, इसलिए मैं आज तुमको टाइम दे रहा हूँ अच्छे से बोल रहा हूँ। तो इसको थोड़ा सोचने के लिए भी टाइम चाहिए, ये बोलेगी। लेकिन मेरा ये है कि जैसे कि मैं अगर एक फैक्ट बात बताऊँ ना तो इससे बहुत लोग एग्री भी करेंगे। इंडिया का बहुत लोग जानते हैं जो एजेंसी है वो रॉ है, पाकिस्तान का जो है वो आईएसआई है। तो जब हम लोग छोटे हुआ करते थे ना, करीबन 10th या 9th में हुआ करते थे इस तरीके से क्लास स्कूल में, तो कहीं ना कहीं अभी तो मेरे को पता चल गया आईएसआई पाकिस्तान की एजेंसी है, इंडियन एजेंसीज है। लेकिन इससे पहले मैं ये समझता था कि आईएसआई एक आतंकवादी संगठन है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे मीडिया में इस चीज़ को पोर्ट्रे किया जाता है। हाँ, मैं भी जानता हूँ कि बहुत लोग ऐसे भी होंगे ना भी वो रॉ को मानते होंगे, वो समझते होंगे कि ये कोई आतंकवादी वो है, क्योंकि हम लोग की मीडिया इस तरीके से पोर्ट्रे करती है ना इमेजेस को कि फिर जब धीरे धीरे बड़े हुए फिर उस चीज़ के बारे में पता चला, उसके बारे में नॉलेज इंक्रीज हुई तो समझ आया कि आईएसआई का जो लिंकअप है वो आर्मी के साथ है और वो वहाँ की खुफिया एजेंसी है जो कि पूरे वर्ल्ड में काम करती है। तो इस चीज़ के बारे में धीरे धीरे क्लियर हुआ और आज इस वीडियो के थ्रू भी बहुत कुछ क्लियर हो गया। जैसे कि पता है इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। इंटेलिजेंस एजेंसीज जो होती है ना वो मतलब उनको तो कुछ क्रेडिट भी नहीं मिलता। हाँ, ये है। जो आर्मी है उसको क्रेडिट मिलता है, जो एयरफोर्स है उनको क्रेडिट मिलता है, सबको क्रेडिट मिलता है। पर जो इंटेलिजेंस एजेंसी होती है उनको शायद वो मर भी जाते होंगे तो उसको पता नहीं चलता होगा कि ये हमारे पता क्यों नहीं चलता होगा, पता तो चलता होगा लेकिन उसकी जिम्मेदारी नहीं लेती वो कंट्री। जैसे इसमें बोला गया हाँ कि बहुत सारे एक लोग पकड़े भी गए हैं, लेकिन इनका कुछ इस तरीके का आएगा कि ये लोग इस तरीके से उनको ट्रेंड करते हैं, फिर उस तरीके से करते हैं ना कि उस आदमी को अगर पकड़ भी लिया जाए ना तो भी उस आदमी के थ्रू पता नहीं कर पाएंगे कि ये बंदा आईएसआई का है। राइट, ये मेरा पॉइंट था कि उनको कोई क्रेडिट भी नहीं मिलता उनकी, ना इनको कोई मेडल मिलता है ना कुछ मिलता है, क्योंकि अगर इनको मेडल मिलेगा ऐसे मिलेगा तो फिर पब्लिक हो जाएगा कि हाँ ये वो है, तो हो सकता है आतंकवादी उसको इजीली टारगेट करे। तो इसीलिए इनकी जो लाइफ है यार बहुत सेक्रीफाइस से भरी होती है बहुत ज़्यादा। और अगर आप आईएसआई में और आप कहीं अगर पकड़े भी गए दूसरी कंट्री में तो आप ये समझ लो कि आपकी कंट्री है आपके लिए हाँ अगर बचाने लायक जैसा कुछ होगा तो करेगी,
लेकिन अगर कुछ थोड़ा ज़्यादा होगा तो जो मैंने पहले पिछले वीडियो में भी कहा था कि आर्मी या फिर अपना जो कंट्री है वह हाथ आपके ऊपर से उठा लेगी। तो ये आपको जो भी करना होता है अपने जिम्मेदारी पे करना होता है, और बहुत बड़ा दिल चाहिए यार ये चीज़ करने के लिए। तो सही है, इस वीडियो के थ्रू बहुत हमारी नॉलेज इंक्रीज़ हुई है, और बिल्कुल भी हेट करने की ज़रूरत नहीं है। सब कंट्री की अपनी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, तो और सब अपनी अपनी कंट्री के लिए ही काम कर रहे हैं, ठीक है। किसी के लिए किसी को गलत समझना कोई वो मतलब नहीं है। पाकिस्तान अपने सिक्योरिटी रीजन की वजह से करता है, इंडिया अपने सिक्योरिटी, अमेरिका वो करता है, सबके अपने अपने हाँ। तो अगर वीडियो गाइस अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, जो भी आप लोग के दिल में हो। बिल्कुल ऑफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग ने बहुत पीसफुली इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखा है, शांति से बैठ के एक एक चीज़ को समझा है, ताकि आप लोग जो हमको दिखाना चाहते हो अगर हम बीच में बकबक करते तो फिर वो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो वैसे ही आप लोग भी अगर कुछ और चीज़ अगर से छूट गई है, कुछ कवर नहीं हो तो कमेंट में हमें बता सकते हो, और बहुत पीसफुली हैंडल करिए ये सब चीज़ों को। सेंसिटिव चीज़ें हम इस पर ज़्यादा आते नहीं हैं एक्चुअल में, लेकिन अगर आए हैं तो अगर हम लोग की भी मैच्योरिटी लेवल आप देख रहे होगे तो हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लोग भी उस लेवल की मैच्योरिटी दिखाओ और अच्छे से कमेंट करो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर कर सकते हो, और चैनल को जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करो। और हाँ, शिल्पा का भी चैनल सब्सक्राइब करो, उसमें भी एक से एक धाकड़ वीडियो आ रही है दिन पे दिन, ठीक है। तो गाइस चलते हैं हम लोग, फिर मिलेंगे इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ज़्यादा से बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे गाइस। और कल मुहर्रम है, उसके लिए भी कोई स्पेशल वीडियो सोचेंगे हम लोग। बाय। अगर नहीं सोच रहे तो कमेंट सेक्शन में